Good morning students, welcome back to our online sessions of science class 9. I hope you and your family will be safe in the pandemic situation, so I requested to you and family also to take care of themselves, and if necessary then go outside, unnecessary just avoid to go outside the homes, just avoid the crowded place, and it should be necessary then use the masks that cover the protective face of mask, use the sanitizers before touching any objects, as well as use to wash your hands within within 20 seconds when you are in homes. So stay home and stay safe. Just we discussing about our topics that we are learning in a part 1 about the motion. Now generally we discussing about the motion having a specific forms that we discussing uniform motion, non-uniform motions, as well as the speed, velocity, distance that we discussing in our previous classes. Also we discussing into the earlier class ki speed is what, average speed is what, uniform speed is what, this type of discussion that can be happen in our previous classes. For today we discussing about the topics that is based on to the velocity, difference between speed and velocity, average velocity, uniform velocity, and the difference between this average speed and average velocity, right? So average speed and average velocity is what? First of all we discussing about the velocity. So what do we mean by the velocity? So first of all, yesterday we were discussing about the uniform speed. Speed is what? The object, a body that cover a specific distance in a specific unit of time. The ratio of the total distance upon total time that gives the distance. Okay? Or speed, sorry. Speed is equal to V upon S by T. That we have learned yesterday. Now velocity is what? First of all, speed. Speed is which type of quantity? Scalar quantity. Speed is a scalar quantity that only tells how fast the body is moving. Speed is what? Speed is a scalar quantity which generally require the magnitude. It doesn't require the direction in which direction we are moving. So speed is generally a scalar quantity which only give us the information how fast the body is moving, but it does not give a particular directions about which the body have been moved. In which direction the body has moved, that doesn't give the information in a speed. So speed is a scalar quantity which only gives the informations about how fast the body is moving, but it does not give the information about in which direction the body is moved. Okay, so that informations how fast the object is moving and in which direction the body is moving, that is generally known by the specific quantity is called as a velocity. So velocity is a vector quantity which gives us the magnitude as well as the direction. So velocity generally give us the information about how fast the object is moving as well as in which direction the object is moving. That entire information that we generally get from the specific form of the velocity. So velocity is considered as a vector quantity. So velocity is generally how fast the object is moving in a particular direction. So that is change in the object places. In a specific direction the object is moving, it means what? Change in position. The velocity is generally described in a form of displacement upon a specific time. So how much displacement that taken as the object in a specific of time, that is generally called as a velocity V. So velocity is equal to what? Generally displacement upon time taken for the displacement. So velocity that can be defined the displacement of object in a specific unit of time. So in other words, velocity is the distance travel in a given direction. Distance travel in a given direction means what? Displacement. अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक specific direction के अंदर मैं move करूँगा तो मेरी position change हो गई. तो change in position is what? It is a part of the displacement. So in other words, the velocity is a part of the distance travel in a specific direction, that is called displacement in a specific unit of time, that is called velocity. So velocity is equal to displacement upon time taken for the displacement. The ratio of that form is generally gives us the velocity. So if a body that travels a displacement s in a time t, so velocity v is given like v is equal to s upon t. Yesterday we also discussing about v is equal to s upon t in a form of speed. So velocity is v is equal to s upon t. S is a part of the displacement where t is the for time taken for the particular form of the displacement. तो आप इसको v is equal to s by t से velocity को describe कर सकते हैं. So if you want to know the velocity, one should have a data for the magnitude as well as the direction we have.
we both required the magnitude as well as the direction, that both we have to be required. So velocity is generally considered as a vector quantity. So if we require both the form, the magnitude as well as the direction in a specific form, the velocity, that should be useful for us. So how can we find the velocity? It's unit time. So if you are find out the unit of the velocity, that is the same as we have to discussing into the speed. So displacement, that is the change in position which is measured into the meter, and time taken for the displacement, that is measured into the second. So displacement upon time taken for the displacement, that is meter upon second. So unit of the velocity is meter by second. Meter by second, that is the part of the velocity. Also you can be as centimeter per second, kilometer per hour. These are also as a part of unit that can be used in a part of the velocity. So clear what is called velocity? So velocity just give us the information about how fast the object is moving and in which direction the object is moving, that both the criteria that should be implemented by the velocity. Now next topic, that is what? The difference between speed and velocity. If I want to know the difference, what is the difference of speed and velocity, how we can be judged? For speed is a scalar quantity while velocity is a vector quantity. Speed only gives the information how fast the object is moving, while the velocity gives us the information how fast is moving the object and in which direction the object is moving. The both having a specific formula, v is equal to s by t, as well as velocity is equal to v is equal to s upon t, having a same unit like centimeter per second, meter per second, kilometer per hour, as well as the velocity having centimeter per second, meter per second and kilometer per hour. For example, a car travels 120 kilometer in 3 hours. I just use a simple statement. A car travels 120 kilometer in 3 hours. That is what? That generally gives you speed, because the car from which point it should be started and which direction it can be moved, that doesn't give the information. Only it gives the information that car travels 120 kilometer into the 3 hours, which is generally give its magnitude but not give the direction. So it should be a speed. But if I'll say that a car travels from the point of origin O having a 0 kilometer and moving to point A having a 120 kilometer in a south direction. If the direction is used, then the word is used as a displacement, as a part of the velocity. Okay. So if I use the word, slightly I change. If I say the car travels 120 kilometer in 3 hours, which doesn't any requirement of the origin and final point. But if I say that a car travels from the 0 kilometer to O point and moving at the 120 kilometers at A point having on a south direction, then this type of the movement is generally considered as a velocity. So in the first example, a car travels 120 kilometers in 3 hours. It does not give the clear identification about the direction. So it is generally called as a speed. So speed is equal to velocity s upon t. So 120 by 3, that is a 40 kilometer per hour. So speed, that is a 40 kilometer per hour. Simple. But if you want to find out the velocity, thus the car in a form of unknown direction, so it should be a speed is 40 kilometer per hour. But in a second situation, I told you a car starting from the origin point O having 0 kilometer up to point A having 120 kilometer in a south directions within a 3 hours, then it should be represented as a displacement, because you have a magnitude as well as the direction. So velocity v is equal to what? Displacement upon time. Now how we can find the displacement? Displacement is equal to final position of the object minus initial position upon time. So the car started from the 0 kilometer, it is the initial point जहाँ से वो start हो रहा है, and moving up to 120 किलोमीटर वो उसका final point है. तो displacement अगर find करना है तो final position minus initial position upon time 120 minus 0 by 3, that is also 40 kilometer in a south direction. So direction is using that, it should be a part of the velocity. तो ऐसे हम speed और velocity का differentiate कर सकते हैं. These are the general examples to bifurcate the speed in velocity. So two topics clear कि velocity क्या है, speed और velocity क्या है. Next we discussing about the average velocity. देखिए average velocity के बारे में अगर हमें discussion करना है तो सेम जैसे एवरेज स्पीड के बारे में हमने डिस्कशन किया था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी होता है. सो रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ने कितने कितने डिस्टेंस कवर किया यानी कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है. सो रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फॉर कंप्लीटिंग दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट
having a total time taken for completing the displacement, that is called as a average velocity. So average velocity is equal to total displacement of object divided by the total the time taken for the total displacement. इसको आप क्या कहोगे? एवरेज वेलोसिटी कहोगे. अभी क्या होता है कि यहाँ पे एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट एट x1 हैविंग अ टाइम t1 एंड पॉइंट x2 हैविंग अ टाइम t2. यानी कि ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं एक x1 पोजीशन पे, उसका टाइम t1 था और x1 से वो जैसे x2 पे जा रहा है उसका टाइम t2 हो रहा है. तो इसके लिए मुझे एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करनी होगी? तो एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना पड़ेगा. तो आपके पास दो पोजीशन था x1 और x2. x2 आपका फाइनल हो गया, x1 आपका इनिशियल हो गया. तो x2 माइनस x1 उसके लिए भी टाइम के लिए t2 माइनस t1. तो x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिखेंगे, t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखेंगे. तो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करना है तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इस हिसाब से हम उसको लिख सकते हैं. और उसके लिए वी ए वी, एवरेज के लिए स्मॉल ए वी और आगे कैपिटल वी लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिलेगा. ठीक है. तो एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करना है तो इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जनरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड हमने कंसिडर किया था इन द प्रीवियस एग्जांपल, वैसा ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. सो इफ द वेलोसिटी ऑफ अ मोशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन के फॉर्म में और उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म है विद द इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम. सो इफ a velocity of a body in a motion that remains equals, it means constant with the specific time, so body is said to be moving into the uniform velocity. तो आप कहेंगे कि वो uniform velocity से move कर रहा है. So under the uniform velocity के अंदर the objects which is having a uniform velocity or travel on a straight line does not change its direction. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्ट्रेट ही मूव करता है, इट डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखती होती है. सम ऑफ द थिंग्स विच हैव टू बी कीप्ड इन योर माइंड टू रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सबसे पहला होता है कि स्पीड ऑलवेज बी कांस्टेंट. इसका स्पीड जो होता है बॉडी का वो कांस्टेंट होना चाहिए. स्पीड कांस्टेंट होगा तभी वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी उसका कांस्टेंट होगा. तो स्पीड ऑलवेज बी कांस्टेंट हैविंग द ऑब्जेक्ट. सेकंड जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि डायरेक्शन डज नॉट बी चेंज. व्हेन यू हैव टू बी मूविंग ऑन टू द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्पीड शुड बी कांस्टेंट, डायरेक्शन डज नॉट बी चेंज. इवन if it should be a above condition is not be fulfilled, we say that velocity of body is not be having a uniform velocity. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ कांस्टेंट स्पीड और इट डज नॉट, इट मे बी चेंज इट्स डायरेक्शन, तो इट डजंट कंटेन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी. और नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कशन करना है, दैट इज अबाउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है और उस पर से मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? सी दैट द ऑब्जेक्ट हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट O is my initial position. From the O as a initial position, the object that is moving at a x having a 60 kilometer at a speed 60 meter. Now x to A, I have to write there A, which having a distance 40 meter, and A to Z, that is also final position Z. Okay. So distance is what? O to x, x to A, and A to Z. That is a part of the distance. So, and that is taken with, it will be take minimum 80 time period of, generally it can be take 80 second. इसको कवर करने में उसको 80 सेकेंड लगता है. सो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा वो हमें समझना है सबसे पहले. तो इस क्वेश्चंस के अंदर अगर मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझना है तो कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे? जस्ट सी हियर, यहाँ पे एक पॉइंट का नाम देते हैं, दैट इज़ द ए. आई विल राइट हियर ए. ओके. सो अगर मुझे एवरेज स्पीड अगर इंप्लीमेंट करना है, इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन व्हाट? टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर हो रहा है? 60 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर. और टाइम कितना लग रहा है इसके लिए? 80 सेकेंड.
तो 60 प्लस 40 प्लस 60 कितने हो जाएंगे? 160 मीटर। 160 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपके पास? 80। टाइम कितना है आपके पास? 80 है। सो अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 160 अपॉन 80 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की क्या होगी? 2 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। उसको एवरेज स्पीड कहेंगे। तो टोटल डिस्टेंस 60 40 60 अपॉन 80 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड, इतना उसका एवरेज स्पीड हुआ। पर एवरेज वेलोसिटी क्या? एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगता है उसको एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है? एक्चुअली यहाँ पे आके व्हीकल मूव किया है, तो इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन कितना है? 40 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 40 माइनस 0, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80। तो 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 यानी क्या होगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप इसका रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अंडरस्टूड कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, उसके अलावा एवरेज वेलोसिटी क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या और डिफरेंस ऑफ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, दैट विल बी गिव द क्लियर आइडिया अबाउट द वेलोसिटी. So two topics that should be clear. One is the speed that we discussing in the previous class. उससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उसके बारे में डिस्कशन किया था, स्पीड के बारे में. आज हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया है. कल जब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ तो हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या, फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो आई होप कि टुडेज लेक्चर्स वाज एंजॉयड बाय यू एंड इजीली अंडरस्टैंड कि what is velocity, how we can be find, what is the quantities, so that should be easily understood by you. So just revise this type of questions and write in your own words. Just practice these questions and revise more and more, so that should be easily benefit for you. So I hope today's session was comfortable and easily understandable by you. When we meet tomorrow with the new topics about the acceleration, students keep revising, keep studying, keep updating yourself. Stay home, stay safe, take care and bye.